Hello students, how are you all? Welcome to our channel We Can. Today we will discuss the question answer of chapter number 3 of geography, that is ingredients of modern industry. Okay, so let's start with a very short question answer. First question is, what is mineral? The answer is, a mineral is a naturally occurring substance on the earth's crust having a definite chemical composition. ये हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि किस तरीके से पर्टिकुलर जो होते हैं सब्सटेंस अर्थ की क्रस्ट में उनको हम केमिकल कंपोजिशन के साथ उनको मिनरल्स कहते हैं. ओके, गिव two examples each of ferrous and non-ferrous minerals. So example of ferrous minerals are iron or manganese, and examples of non-ferrous minerals are gold and silver. ठीक है ना, very simple. Now question number 3 is, name the different types of mining. So the different types of minings are open cast mining, shaft mining and offshore drilling. These three are the types of different types of mining. ठीक है ना. Okay, question number 4 is, mention a few ways in which minerals can be conserved. So some ways of conserving minerals are use of substitutes, recycling, and finding alternatives methods, use of better mining methods, reducing exports of quality ores. ये कुछ एग्जाम है हमारी एडवाइसेस या वेज जिनको यूज़ करके हम जो है हमारे मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है. Now the question number 5. Name the leading producers of petroleum in the world. So the following countries are the leading producers of the petroleum in the world. On the first number, Middle East countries like Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar. Second is United States of America. Third is Venezuela. Fourth is Russia. Fifth is Algeria. And sixth is Libya. Okay, these are the main countries of the producers of petroleum. Okay. Question number 6 is, mention the leading producers of hydel power in the world. So the leading producers of hydel power in the world are Norway, Sweden, USA, Brazil and China. Okay. Question number 7 is, from which two minerals is nuclear energy produced? So nuclear energy is produced from uranium and thorium. Very easy. Question number 8 is, what are the raw materials used in biogas plants? So biogas plants में we use ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, फॉर्म वेस्ट, इस तरीके के वेस्टेज जो होता है वो हम यूज़ करते हैं बायोगैस में. ओके, नाउ द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स. डिफरेंस बताना है हमें मेटालिक और नॉन मेटालिक में. तो वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल मेटालिक मिनरल्स कंसिस्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटालिक डू नॉट कंटेन्स मेटल. एंड सेकंड वी कैन से they are malleable, ductile and hard, and non-metallic are soft and non-lustrous. And metallic के एग्जाम्पल वी कैन गिव आयरन और सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके से बक्साइट. All these are metallic, and in the non-metallic examples we can say potash, salt, sulfur, etc. Okay, so these are the differences. Question number 2 is, distinguish between conventional and non-conventional sources of energy. So in the conventional sources, they are traditional sources and are being used for a long time. Okay, and non-conventional sources are recently developed sources. ये इनका first difference है, we can say. And सेकेंडली वी कैन से दे क्रिएट पोल्यूशन. कौन से कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं दे क्रिएट पोल्यूशन, और नॉन कन्वेंशनल
रिसोर्स जो सोर्सेस हैं दे डू नॉट क्रिएट पोल्यूशन, ये एक एग्जांपल डिफरेंस और दे सकते हैं. एंड वी कैन से the conventional sources are non-renewable. For example, coal है, petroleum है, and etc. And non-conventional are renewable. Examples are like wind energy, solar energy. यानी कि ये renewable है non-conventional, और conventional जो है non-renewable है. ठीक है ना. And one more thing we can say, conventional are confined to some regions and non-conventional are widespread. ये one more difference we can say. ठीक है. Now the question number 3 is distinguish between open cast mining and shaft mining. So what is open cast mining? It involves the removal of overlying materials to extract minerals, while shaft mining, it refers to the construction or vertical or horizontal shafts to extract mineral. ठीक है ना, ये डिफरेंस है दोनों में. Secondly, we can say it is shallow and shaft mining is deep. Open cast mining is easy to get minerals and shaft mining is not so easy to get minerals. And open cast mining involves less cost and shaft mining involves more cost. ये difference इन दोनों में हम बता सकते हैं. ठीक है. Now the question number 4, list out the different ways in which solar energy is used in India. So different ways in which solar energy is used in India are like cooking, water heating, drying of crops एंड लाइटिंग ऑफ स्ट्रीट्स. ये जो काम है इंडिया में अभी जो हम कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी के थ्रू किए जा रहे हैं. ठीक है ना. ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज्ड इन इंडिया. So India is a peace loving country, so therefore use of nuclear energy is restricted. ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेक्निक नहीं है या हमारे साइंटिस्ट के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है. कर रहे हैं, किया है, लेकिन हम यूज़ नहीं कर सकते, करते नहीं है. ठीक है ना. तो ये है. Now the long question answer. So first question is minerals are very important to us. Why? तो इनको हम पॉइंट वाइज रीज़न बताएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, minerals are very important to us because first of all these are the backbones of our industries. Our mineral बेस्ड इंडस्ट्रीज गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम मिनरल्स. यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी उनके लिए बैकबोन की तरह है ये. तो कितना इम्पोर्टेंट होंगे सोच सकते हैं आप. एंड सेकेंड इज दीज आर एसेंशियल फॉर मेकिंग मशीन्स फॉर इंडस्ट्रीज. थर्ड इज दीज आर यूज्ड इन वेरियस वेज. फॉर एग्जाम्पल फार्म इम्प्लीमेंट्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, रेलवे शिप्स एट्सेट्रा नीड मिनरल्स. मतलब इन्हीं के थ्रू हम ये सब चीज़ें बनाते हैं. ठीक है ना. जो हमारे डेली लाइफ की चीज़ें हैं, हमारे आप कह सकते हैं डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स है, ये सारी चीज़ें हैं. फोर्थ इज वी कैन से मिनरल्स आर नीडेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, बिल्डिंग्स, डैम्स एट्सेट्रा. किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें भी हमें मिनरल्स चाहिए, है ना. तो वो कितने इम्पोर्टेंट होंगे सोच लीजिए आप. फिफ्थ इज दीज आर यूज इन मेकिंग ऑफ यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिक गुड्स. डे टू डे लाइफ में भी कई चीज़ें जो मिनरल से बनती हैं जिनके बिना हमारी लाइफ ही हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं. तो मिनरल्स की तो इम्पोर्टेंस है वो मतलब बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में. Second question is there is a need for the development of non-conventional sources of energy. Give reasons. So the non-conventional resources are renewable. They are not limited and there is no fear of their elimination. यानी कि उनके ख़त्म होने का डर नहीं है. So these resources are widely spread, like pollution free and eco-friendly. Therefore there is a great need for the development of non-conventional sources of energy like sun, wind, tides etc. Tide energy, wind energy, sun energy, हमको उसे यूज़ करना चाहिए क्योंकि इनसे ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता है और ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी है. तो इनको जो है
इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के सोर्सेज को हमें डेवलप करना चाहिए. ओके. Now the question number 3 is mention 4 different ways of conserving power resources. So 4 different ways of conserving power resources are like use energy efficient equipment, use alternative sources of energy, do not use electricity unnecessarily and use public transport. ये जो कॉमन से हम जनरली भी कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है पावर रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, उनका किस तरीके से रिजर्व कर सकते हैं. ये इसके लिए आप कह सकते हैं सजेशन है. Like question number 4 is state the advantages and disadvantages of oil. So the advantages of oil, we can say oil is very useful to us. Like it can be used to produce energy, electricity, it can be used to make plastic, it can be used in many forms, like petrol, kerosene, diesel, lubricant, paraffin wax, and the byproducts from raw materials. and for पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी ऑयल जो है बहुत इम्पोर्टेंट मटेरियल है. एंड इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो है थोड़ा सा कम कॉस्टली पड़ता है ये इसका ट्रांसपोर्टेशन. तो ऑयल में इतने सारे एडवांटेजेस हैं, वाइल देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. सो फर्स्टली वी कैन से इट इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, हर जगह नहीं मिलता है. सेकेंडली इट्स यूज क्रिएट्स पोल्यूशन ज़्यादा होता है. इट इज़ नॉट रीन्यूएबल, एक बार ख़त्म हो जाए तो हम दोबारा बना नहीं सकते हैं, ये इसकी प्रॉब्लम है ना. And fifth question is conservation of fuels is the need of the hour. Why do you think not much stress is given to the saving of fuels today? So all the vehicles that we use all over the world move on the fuels. As we know, all the petroleum based fuels are exhaustible natural resources. We need to use these fuel resources judiciously as we have limited reserves of the same, है ना. Once exhausted, we won't be able to get them back. So we should not waste the fuels, whether petroleum or coal. At present, we are overutilizing and even wasting these precious resources due to ignorance, lack of importance, or deliberate reckless attitude in order to show off to others. We should respect this limited gift of nature and must learn to utilize it properly. इसमें पूरी जो आप कह सकते हैं कि किस तरीके से उसकी इम्पोर्टेंस भी बता दी और कंजर्वेट करने के सारे प्रोसेस और वेज भी बता दिए कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमें मतलब इस नेचर के गिफ्ट को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है. तो हम दूसरों के सामने शो ऑफ करने में इसको कितना जितनी ज़रूरत नहीं है मोर देन नीड के से हम यूज़ कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि शो ऑफ के लिए. ये ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर एक बार ये ख़त्म हो गया तो फिर हम उसको दोबारा नहीं बना सकते हैं, दोबारा नहीं पा सकते, क्योंकि इट विल टेक सो मच टाइम टू मेक पेट्रोलियम और मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का आपको पता ही है कि कितना टाइम लगता है. इट विल टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स. तो ये हमारे लिए मतलब एडवाइजरी दे रखी है इस क्वेश्चन में. Now the value added question. So first is nuclear energy is the recent source of energy, but this could be disastrous as well. How can we use this energy safely and for longer period of time? So nuclear energy is the recent source of energy, but it has a very restricted use as nuclear elements are highly radioactive. So the equipment too should be safe and handled with care by experts only. यानी कि जो हमें
इनको इक्विपमेंट्स को, न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, वो ट्रेंड होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं। आपको पता है, ज़रा से भी मिस्टेक हो जाए तो पूरा का पूरा प्लांट जो है ब्लास्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। तो ये बहुत डेंजरस एक वो है, और रेस्ट्रिक्शन होता है, हर कोई कर नहीं सकता इसको, ठीक है ना। Now the question number second is, suggest how we must conserve plants and trees as they are our best friend. So plants and trees are an integral and essential element of the environment. We should take care of these. Okay, they give out oxygen and reduce the harmful effects of various gases in our environment. Many of the plants and trees have medicinal properties. Okay, they keep us safe from various diseases, and apart from that, we get many food items from the plants and trees. We get fuel, wood, honey, lac, fruits, vegetables from the plants and trees, and we must consume them as they help us to keep the environment clean and green. Of plants and trees की इम्पोर्टेंस तो हम जानते ही, हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा है, कितनी सारी हमारी जो डे टू डे की नीड्स हैं वो प्लांट एंड ट्रीज के ज़रिए पूरी होती हैं। और अगर हम उन्हीं का ध्यान नहीं रखेंगे, उनको ही कंज़र्व नहीं करेंगे, तो इसको भी थोड़ा टाइम तो चाहिए ना ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए। किस तरीके से अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर ये हमारे लिए, मतलब हमारे लिए और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम क्या सोच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू बन सकता है। इसलिए वी शुड टेक केयर एंड वी शुड कंजर्व प्लांट्स एंड ट्रीज. Okay, hope you understand the question answer of this chapter. If you like the video, please like, subscribe and share. Okay, goodbye, have a nice day ahead.